Good morning to everyone. Today I am going to discuss with you a topic of grammar. The name of the topic is the sentence. Sentence means vakya. Students, as we all know that a sentence is a combination of words which gives complete meaning. वर्ड्स को कंबाइन करते हैं सेंटेंस में, बट उन वर्ड्स को जो कंप्लीट मीनिंग को कंप्लीट करते हैं व्हाट वी वांट टू से टू अदर्स. For example, I am doing my duty. This is a complete sentence. This is a combination of words also. But for constructing an accurate sentence, we should have follow some rules. Firstly, sentence begins with a capital letter. See, have you done your work? Here, H is the first letter of this line and it is capital. Grammatically arranged in correct sequence. Every sentence follows a correct sequence. See, I am doing my duty. Here, I is subject, am is helping verb, doing is verb, my duty object. Next, ends with full stop and a mark of interrogation. See, बच्चे, first sentence is assertive sentence, it's just declarative sentence, so that's why it is ending with the full stop, and second sentence is ending with the mark of interrogation. Maybe we can say that it is question mark. So now students, I am going to discuss with you kinds of sentence. We have 4 categories. According to the sense, we have classified the sentence into 4 categories: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. Firstly, I am going to discuss with you first kind, that is assertive sentences or maybe declarative sentences. Same thing बेटे. हाँ जी, होते क्या है बच्चे ये? Which declare something, which declare our actions. For example, I am eating my food, I am polishing my shoes, I am going to school. तो डिक्लेयर करा कि अगर कोई पर्सन हमसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो वी डिक्लेयर कि व्हाट जॉब वी आर डूइंग एट प्रेजेंट. इट एंड्स विद फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन इज इट एंड्स विद फुल स्टॉप. ये इसका आइडेंटिफाई करने का वे है कि भाई फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, एजर्टिव स्टेटमेंट ही है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज मेकिंग, एट द प्लेस ऑफ मेकिंग वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड कुकिंग. माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी. आई एम डिक्लेयरिंग माई मदर्स जॉब बाय this sentence that my mother is making or my mother is cooking food for me. Next kind is interrogative sentences. बच्चे, interrogative sentences are those sentences that have questions and end with questions. We make this sentence to ask questions from someone. और सबसे बड़ी हाउ टू आइडेंटिफाई, ये जो मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क है ना बेटे, इट वुड हेल्पफुल फॉर यू दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. अगर फुल स्टॉप देखेंगे तो यू विल ईजिली से दैट कि इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इफ यू विल सी एट द एंड ऑफ द sentence this mark, then blindly you can say that this is interrogative sentence. For example, have you paid your school fine? Why are dogs not allowed in trains? In these 2 sentences, questions are asked. And बच्चे, one more thing, have you noticed that I have constructed 2 sentences, 2 different sentences in a different manner. For example, first sentence, in first sentence I have used have, and have is a helping verb of perfect tense. Next,
In second, I use the word why. We know very well this word is belong to WH family. WH family is that family which is used to ask for questioning to someone. Here are the words which are used for making sentence. Only WH family की हेल्प से सेंटेंस नहीं बनते बेटे. When you do the tense topic of tense, then आप नोटिस करते हैं कि while learning टीचर आपको इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट भी बनानी सिखाता है उन्हीं सेंटेंस को फॉर्म करके कि व्हेन द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट and ends with question mark, then assertive statements converted into interrogative statement. So these are the list of the words which we can use to make interrogative statements. Next kind is imperative sentences. बच्चे, what are imperative sentences? Are those which express request, order और एन एडवाइस. नेक्स्ट, सिमिलैरिटी जो एजर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में है, दैट इज ये भी फुल स्टॉप से एंड होता है. इट कैन एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन टू, लेकिन समटाइम ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ भी एंड हो सकता है, वेरी रेयर. पर कहाँ पे? इट डिपेंड्स अपॉन द इमोशन इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में किस तरह का इमोशन यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, डोंट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स. अब मैंने किसी को बाय यूजिंग दिस वर्ड आई एम प्रोहिबिटिंग समथिंग कि ही शुड नॉट डू. डोंट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स. Always obey the traffic rules. In second sentence, I am advising, please bring me a glass of water. By using this sentence, I am requesting to someone कि bring me a glass of water. Go to the post office at once. This is order. For example, please open the door. This is request. Open the door. This is not request bete. This is an order which is given by me to someone. Next sentence is exclamations. अब exclamations express some strong or sudden feeling. अब ये जो फील होता है ना बेटे, ये फील इज नॉट प्री प्लान्ड, ये सडन होती है. किस तरह से सडन फील होती है? We express our feel. There are some words in English language, in grammar, that we can use to express our feel. For example, wow, what a tall building, brilliant, awesome. भाई ये awesome word जो है ये तो हम always ही use करते हैं for weather. How is the weather? Awesome. When we give compliments to a person on Facebook, on his post and on his status, then we use this word awesome, amazing, bravo. Bravo word is used to motivate someone for doing good task. Fantastic, tremendous. So these are the words which are used to show our strong and sudden feelings, to motivate something and somebody. Here are some rules for making exclamatory sentence. While writing an exclamatory sentence, exclamation mark, हाँ जी भाई, this is a very very important thing. Exclamation mark, ये है जी exclamation mark, should be at the sentence end. It means where we should place this mark. अगर ये नहीं होगा तो हम लोग recognize नहीं कर पाएंगे. लेकिन ये जो मार्क है दैट वुड हेल्पफुल टू यू टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. कि इफ एनीबडी वुड से टू यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स कि बच्चे इसको आइडेंटिफाई करो,
तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस मार्क्स कि दिस इज exclamatory sentence. For example, oh, I didn't see you come in. In this sentence, a person is confused because why he's confused? Because he did not see the person who was standing before him, and this is expression of surprise. Next, I don't know what happened here. So these are the expression of confusion. So students, at the end of the chapter, I would guide to you, I want to say to you कि बच्चे सिर्फ ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं इनको हमने क्रैम नहीं करना. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने 4 काइंड्स पढ़ी. 4 काइंड्स में सिर्फ हमने उनकी काइंड्स उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं सीखी. साइड बाय साइड वी ऑल्सो लर्नड हाउ टू चेंज एजर्टिव टू इंटेरोगेटिव. सबको बोलने का मेथड, सबको प्रोनाउंसिएट करने का मेथड डिफरेंट है. आई एम डूइंग माई ड्यूटी. हैव यू डन योर वर्क? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. और इनको हमारी टोन ने ही बताना है कि अदर पर्सन वुड अंडरस्टैंड कि हम बोल क्या रहे हैं. हम वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग, we are questioning to him and we are requesting to him. So try to learn. Thank you. Have a nice day.